let's begin. So we're starting this paper 1, March 2022. Okay, let's look at the instructions very quickly. So we need to make sure that we are showing all necessary working as usual. And when we're doing the working, we have to make sure that our working is correct to at least 4 significant figures. Sari working aapne at least 4 significant figures pe aapne show karni hai taki aapke final answers accurate aa rahe ho. So you've got to be careful about that. And that's pretty much it. That's what we need to be careful about. Let's begin with this paper. So I'm pura paper kar rahe honge inshallah. Let's start with the first question. A curve with equation y equals f of x is such that f dash of x equals 2x raised to power minus 1 over 3 minus x raised to power 1 over 3. It's given that f of 8 equals 5. We have to find f of x. So we've got the derivative given. F of x usne bataya hua hai. F dash of x bataya hua hai. Aapko kya karna hai? Aapko original curve find karna hai. How do you do that? You integrate this function. So let's do that. You've got the derivative given. You've got to go back to the original function. Isko integrate karenge. Let's do the integration. 2 is a constant that stays as it is. X ki power by 1 add kar diya, minus 1 over 3 plus 1, that becomes 2 over 3. And then we divide by that increased power, we divide by 2 over 3 as well. Similarly, here we add 1 to the power of x, 1 over 3 plus 1, that's going to become 4 over 3 divided by 4 over 3. And then don't forget, plus c after that. उसने ये point दिया हुआ है यहाँ पे, उसको use करके हम c की value find कर सकेंगे बाद में. ठीक है? अच्छा, let's simplify this. इसको simplify कर लेते हैं. This 3 is going to go to the numerator. Similarly, this 3 is going to go to the numerator. So we have 2 into 3. In fact, we can do this cancellation here as well. This 2 and this 2 get cancelled. 3 ऊपर चला जाएगा. We've got 3x raised to power 2 over 3 minus 3x raised to power 4 over 3 divided by 4 plus c. This is f of x. Now we are given this point f of 8 equals 5. That means when the value of x is 5, when the value of x is 5, f of x is, when the value of x is 8, the value of f of x is going to be 5. So basically x 8 है तो y 5 है. ये इसके अंदर input कर दें. Put f of 8 equals 5. So in place of x, we're going to input 8. In place of f of x, we're going to input 5. We have 5 equals 3 into 8 raised to power 2 over 3 minus 3 into 8 raised to power 4 over 3 divided by 4 plus c. And that's going to give you the constant. It becomes 5 equals 3 into 8 raised to power 2 over 3 kya hoga? If you're confused, just do this on a calculator. But 8 ka cube root 2 hota hai. 2 raised to power 2 is going to give you 4. And then you have 3 into 8 raised to power 4 over 3. Again, cube root of 8 is 2. 2 raised to power 4 is 16. It's going to be 16 over 4 and then plus c. Evaluate this from a calculator. You'll get a value of c from this. You can see what that turns out to be. This gets cancelled. This is 12. 12 minus 12, that gets cancelled. C की value plus 5 आ गई. Okay, C equals 5. Now you can write down the function that you have, f of x. यहाँ पे लिख दें. The function f of x is going to be 3x raised to power 2 over 3 minus 3x raised to power 4 over 3 divided by 4 plus 5. That's your function. Okay, ये आपके पास f of x आ गया. All right, that was pretty easy. Let's move on to the next part, to the next question. A curve has equation y equals x squared plus 2cx plus 4, and a straight line has equation y equals 4x plus c, where c is a constant. Find the set of values of c for which the curve and the line intersect at 2 distinct points. Okay, intersect at 2 distinct points. What does that tell us about the two functions? इनको जब equate करेंगे, इनको point of intersection find करने की कोशिश करेंगे, your discriminant is going to be greater than 0. Okay, so that's what we do here. What we do is we've got a quadratic equation here, quadratic function here, and a linear function here. We're given that intersect at 2 points. So intersection आप कैसे find करते हैं दो graphs की? You basically just equate both of them. दोनों को एक दूसरे से equate कर देते हैं. So we follow that process. We equate the two functions. We've got y already the subject in both of them. In दोनों को directly equate कर देंगे. Y is x squared plus 2x plus 4. That equals 4x plus c. And now you're going to convert it to this form.
that is the standard quadratic equation form. That's ax² plus bx plus c equals 0. इस form में convert करेंगे, एक side पे सारी terms ले जाएंगे, दूसरी side पे 0 होगा. So we take everything to the left side, x² plus 2cx minus 4x. I'm writing the like terms together. X वाली terms इकट्ठे लिख दी, and then we've got the constants which do not have x plus 4 minus c equals 0. Now the x terms, the x term has a coefficient of 2c minus 4. आपने 2c minus 4, आपने x common ले लिया, and the coefficient of x turns out to be 2c minus 4, and we've got plus 4 minus c outside. This is the constant. Okay. Now we've got the value of a from here. A is 1, b is 2c minus 4, and c. Now you've got to be a bit careful here. ये c रखा हुआ है, this c is not the same as the c. These are two different c's, right? So rather than using the equality sign, you can actually use an arrow के b की जगह पे हम 2c minus 4 डाल रहे होंगे, और c की जगह पे b² minus 4ac के अंदर we're going to be inputting 4 minus c. Okay, so we use b² minus 4ac greater than 0. Why? Because the graphs are intersecting at two distinct points. इसके अंदर values input कर दें आप. b is 2c minus 4, so we've got square of that, minus 4 into 1 into 4 minus c. That should be greater than 0, and that's going to give us the values of c that we were looking for. Let's expand this. 2c minus 4 ka whole square. What's that? That's 4c squared. 2c ka whole square minus 2 times 2c and 4. That's going to be 16c plus square of 4, which is 16. Minus 4 times 4, that's 16. Minus 4 times 4c, minus 4 times minus c, that's going to be plus 4c greater than 0. And now we've got a quadratic equation that looks like this. Quadratic inequality that looks like this. 4c squared minus 12c. And then 16 and 16 get cancelled. We are left with 0 as the constant. So this is greater than 0. Now this is a quadratic inequality. It's a quadratic inequality. How do we solve quadratic inequalities? Let's actually simplify this first. This becomes c squared minus 3c greater than 0. Quadratic inequality solved करने के लिए, what we do is we first find the intercepts. How are we going to do that? We can treat this as an equation. We can say c squared minus 3c equals 0. We get two factors, c into c minus 3 equals 0, c equals 0, or c equals 3. These are two x-intercepts, and then we think of the quadratic curve. This is how the curve looks like, because यहाँ पे c का coefficient positive है. This is how the graph is going to be for this curve. इसके intercepts आपके पास क्या आ गए हैं? Intercepts are 0 and 3. Okay. Now, the curve is supposed to be greater than 0, right? ऊपर वाला part consider करना चाह रहे हैं, जहाँ पे graph x-axis के ऊपर है. So x-axis के ऊपर कौन सा वाला part है? It's either this region or this region. On the x-axis, that's basically towards the left of 0 or towards the right of 3. So you have two sets of values here, c less than 0 or c greater than 3. That's going to be your final result. Okay? This is your solution to this inequality. ये आपके पास c की possible values. Now you've got to be careful here that you don't just do it directly like this, कि आप यहाँ पे इसको factorize कर दें, इस तरह लिख दें. It's a very common error that people end up doing. c into c minus 3 greater than 0, and then you say, if the product is greater than 0, then c should be greater than 0, and c minus 3 should be greater than 0. That would be wrong. You can't do that. Inequalities में ये बिल्कुल नहीं करना. आपने क्या करना है? x-intercept find करने हैं. x-intercept find करके you got to think of the quadratic graph, और उस तरह से सोचना है. ठीक है? So that's the values of c that we've got. Let's move on. Pretty straightforward again. Now we have to find the term independent of x in each of the following expansions. It's a binomial question. What we can do is, for this question, we're going to have the formula in front of us. Formula sheet mein diya hota hai. I'm going to write that here. Or let me just show that to you in the formula sheet. Yeah, so this is where we have the formula. A plus b whole raised to power n. Ye wala formula use karna hai. We've got, this is paper 1. This notation, what does that mean? It means nc1, nc2, and so on, right? Ye apna formula use karna hai. I'm going to write that here on this page.
so that we have this in front, a plus b whole raised to power n, that equals a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 into b plus nc2 a raised to power n minus 2 b square, and so on all the way up to b raised to power n. Now you don't have to write this formula necessarily here. वो तो आपको formula sheet से देखे होंगे. I just want to have this in front here. Now let's compare the two. A की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास? A की जगह पे you've got 3x, in place of b you've got 2 over x square, and in place of n we've got 6. अब क्या करना है सर? फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज इनपुट कर देनी है. What do we want? अच्छा, उसने आपसे पूरा एक्सपैंड करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. आपको एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए. Now you could use the term formula for this if you want. आप वो यूज कर सकते हैं, but अगर पावर बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, अगर पावर बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, it's often just quicker to find the expansion, और उसमें आप देख लें x के बगैर टर्म कौन सी आ रही है, right? I'll show that to you very quickly, because the term formula के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन के एरर्स हो जाते हैं, इंडिसेस के रूल्स नहीं सही आते होते. यहाँ पे आप सिंपली इसको एक्सपैंड कर दें. How would you do that? You'll say 3x plus 2 over x square whole raised to power 6. Let's just expand this thing. What do we get? We get 3x whole raised to power 6. That's the first term. The second term is 6c1 into 3x whole raised to power 5 into 2 over x square whole raised to power 1. Now you can just stop at this point and see कि आपकी powers क्या आ रही हैं इन दो terms के अंदर. First term में x की power क्या आती है? This is x raised to power 6. Second term में x की power अगर आप देखें, this is x raised to power 5 and this is x square. 5 minus 2 क्या हो जाएगा? It's going to be x cube. So second term is basically x cube term. ये जो powers होती हैं, they're always in an arithmetic progression. इनमें difference constant होता है. So अगर first power 6 है, second 3 है, तो difference कितना आ रहा है? -3 का. Next power क्या होनी चाहिए इसके बाद? x power 0 होनी चाहिए, and that's what you want. Independent of x का मतलब है x वहां पे नहीं होना चाहिए. We're looking for x power 0. तो basically आपको third term में already जो आपको term चाहिए थी वो मिल जाएगी. 6c2 into 3x whole raised to power 4 into 2 over x square whole raised to power 2. And if you think about this is x raised to power 4, this is x square and square. ये cancel होके x आपका eliminate हो जाएगा. x आपका eliminate हो जाएगा और आपके पास इसका रिजल्ट जो है इसमें आपके पास term independent of x आ जाएगा. Right? This is the term that we're looking for. इससे आप इसको आप simplify कर लोगे. 6c2 what's that? बाकी सबको ignore कर दें. You don't have to simplify everything else. Evaluate 6c2 into 6c2 में look at this is 15 into 3 raised to power 4. 3 raised to power 4 is 81. And then you've got x raised to power 4. 2 raised to power 2 is 4 divided by x raised to power 4. And that's going to give us the result 15 into 81 into 4. That is 4860. That's our final result. Okay. Walaikum Assalam, Farzan. Please remind me at the end. I'll post the link for that in the chat here. Okay, I'll post the link. This is your final result. Okay, the other notation that you have written, the other notation looks like this. So it's NR. ये formula sheet में ऐसा लिखा होता है, but since your calculator does not have this notation, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं NCR. इसको इस notation में convert कर लेते हैं. But you can write the other notation. That's okay. Calculator में तो आपको यही input करना है बाद में. Okay. All right. So that's 4860. That's our final result here. Let's move on. Again, pretty standard. Next part में वो क्या कहते हैं? अच्छा देखें ये जो ऊपर लिखी हुई थी statement, it's relevant for both parts. It's relevant for both part 1 and 2. Second part में भी आपको क्या करना है? Term independent of x find करनी है. Now in questions like these, you first have to think about what terms do you need in the expansion. Now let me just write that here again. 3x plus 2 over x square whole raised to power 6. And then you've got 1 minus x cube being multiplied with that. So you're going to start from this. जिसमें expansion आपको नहीं करनी.
इससे स्टार्ट करेंगे एंड विल थिंक ऑफ वन टर्म एट अ टाइम। वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सपेंशन के अंदर, तो आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिलेगी जिसमें एक्स नहीं आ रहा होगा। वन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसी कांस्टेंट के साथ, राइट? फिर हमें कोई कांस्टेंट मिलेगा, हमें कांस्टेंट चाहिए ना एट द एंड। एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? we'll have to multiply that with 1 over x cube, or you can say x raised to power minus 3 वाली term from the expansion, x raised to power minus 3 term from the expansion. So उस expansion से हमें दो terms चाहिए। We need the constant term, and we need the term that has x raised to power minus 3. ये दो terms हमें वहां से चाहिए। You're not just going to use 4860, आपको एक और term भी चाहिए, वो दोनों use करनी होगी, ठीक है? अच्छा, now what I'm going to do here, constant term तो मेरे पास है already, मैंने first part में निकाली है उस expansion की। What was that? That was 4860. I'm going to write that here, ignoring everything else, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। The second term that I need is x raised to power minus 3. अब क्या करना पड़ेगा? आपको ये term भी निकालनी पड़ेगी first expansion से, okay? ये term भी निकालनी पड़ेगी। Now that's why I prefer using this method कि expand ही कर लें, because अक्सर आपको दो terms चाहिए होती हैं, दोनों में अलग-अलग term formula लगाएंगे, that's going to take more time. आप simply क्या कर सकते हो? Expansion कर लो, आपको सारी terms इकट्ठे मिल जाएंगे। अच्छा, so what do we have until this point? We've got x raised to power 6, we've got x raised to power 3, x raised to power 0. You see the pattern? Next term क्या होनी चाहिए? Next term हमारे पास आ जाएगी x raised to power minus 3, because ये powers में से 3 subtract होता था, तो हमें एक term यहाँ पे और चाहिए। हम यहीं पे एक और term लिख लेते हैं। The next term is going to be 6c3 into 3x whole raised to power 5. Sorry, 3x raised to power 3 into 2 over x square whole raised to power 3. ठीक है, अब इसको भी expand कर लें। ये देखें आपको क्या देता है? You need this for the second part. ये second part के लिए चाहिए, इसको simplify कर लेते हैं। 6c3 is going to be 20. Let me just confirm, 6c3 is 20, yes, that's correct. 3 का cube is 27 x cube, and then 2 cube is 8 over x raised to power 6. What does that give us? That gives us 20 times 27 times 8, which is 4320 x raised to power minus 3. This is 3, this is 6. 3 minus 6 is going to give you minus 3. ये term आपको चाहिए for the second part. We need this for part 2, तो आपने यहाँ पे इसको भी evaluate कर लिया। So एक तो आपको constant term चाहिए थी second part के अंदर expansion से, एक आपको ये वाली term चाहिए थी। I'm going to write that here as well. That's 4320 x raised to power minus 3. तो expansion से मेरे पास ये दो terms आ गए, ठीक है? And now I need to multiply this by 1 minus x cube. Again, I don't need to do this full multiplication. If I want, I can do that, but I just have to really multiply 4860 with 1 and 4320 x raised to power minus 3 with minus x cube. ये दोनों multiply कर लें बस, you'll get your result. So you've got 4860 into 1 plus 4320 x raised to power minus 3 into minus x cube. That's going to give you 4860 minus 4320, and that's going to give you the final result. ये आपके पास term आ जाएगी final. ये देख लें क्या आती है। 4860 minus 4320, that gives me 540, and that's going to be the final result that you get here, 540. Okay, I hope that makes sense to everyone. Any problems with this? Okay, good. Let's move on to the next part. Now, in the next part, in the next question, yeah. So this is AP and GP. Have I missed anything? Are we done with 3 questions? Okay. Yeah. Question number 4. The first term of a GP and the first term of an AP are both equal to A. Okay, so we've got a GP here and we've got an AP. ये दो different आपके पास sequences आ रहे हैं. The third term of the GP is equal to the second term
of the AP. That's equal to the second term of the AP. Okay. The fifth term of the GP, is equal to the sixth term of the AP. Given that all the terms are positive and not all equal, so that might be needed somewhere. Of course, multiple answers हो सकता आ रहे हो, आपको कुछ ignore करना पड़ेगा. We'll see that later. Find the sum of the first 20 terms. आपको find क्या करना है? आपको find करना है sum of the first 20 terms of the AP in terms of A. In terms of A find करना, that means A की value find नहीं कर सकते, right? It's going to be in terms of A eventually. Okay. Now let's use the information that is given. हमें क्या क्या उसने बताया हुआ है? First term तो दोनों की हमारे पास क्या है? दोनों की first term हमारे पास A है. Let's write that down here first. We've got a GP. And for that GP, we've got some terms given. The first term is A. Let's call this T1. Yeah, दोनों की अलग-अलग होनी होंगी. इनको अलग-अलग लिख देते हैं यहाँ पे. Let's say this is term 1 of the GP. And then we are given the third term of the GP, T3. And we're also given the fifth term of the GP. GP के हमारे पास ये 3 terms दिए हुए हैं. Okay. What are these terms? अच्छा दी नहीं हुई है, उसने equal किया तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बस वैसे. Then we have AP. AP की कौन-कौन सी terms relevant है हमारे पास? First term is A for that as well. So that's A as well. AP की हमें और क्या चाहिए? I'm going to write this here below this. ये T1 है. Okay. So AP की first term A है. और हमें क्या चाहिए? Second term of AP. Second term AP की और third term GP की equal है एक दूसरे के साथ. I'm going to write the term 2 of the AP. ये दोनों equal हैं. And similarly, we've got sixth term of the AP is equal to fifth term of the GP. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं T6. Now, these are the terms that we need from each of these progressions. अच्छा. अब हम क्या करते हैं? दोनों के term formulas हमें पता है. GP का term formula क्या होता है? आपके पास formula sheet में दिया होता है. It looks like this. T raised to power Tn equals A raised to power A into R raised to power n minus 1. This is the term formula for a GP. उसने UN लिखा होता है वहाँ पे. That's okay. It's the same thing. This is the term formula for a GP. For an AP, the term formula is A plus n minus 1 times the difference. That's the term formula for an AP. ठीक है. अब क्या करेंगे हम? हमें रेशियो तो नहीं पता. हमें रेशियो नहीं पता कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की रेशियो क्या है. हम इसको R के टर्म्स पे लिख लेते हैं. What is going to be term 3 of the GP? Let's write that down. A R raised to power 3 minus 1. That's going to be AR square. ये आपके पास third term होगी GP की. ठीक है. And then we have term 5 of the GP. What's that going to be? That's going to be AR raised to power 5 minus 1. AR raised to power 4. ये आपकी GP की terms आ गई. Let's think about the AP now. Second term चाहिए. Let's input that here. A plus 2 minus 1, that's 1 into D. So that's going to be A plus D. Sixth term, again, N की जगह पे 6 input कर दें यहाँ पे. 6 minus 1 is 5. So we have A plus 5 times D. These are the terms that we are looking for. अब क्या करेंगे? हम इनसे equations बना लेंगे. Equations कैसे बनेंगी आपके पास? We are just going to equate these terms. जिस तरह उसने कहा हुआ था, हम कहेंगे this term here. Let me use different colors. Yeah. So this term here, AR square, and this term here, A plus D. A plus D, they should be equal. And AR raised to power 4 and A plus 5D, they should be equal, right? That's what they've stated there. Your terms are equal on each side. Okay, let's equate them. We'll get two equations. AR square. You had one equation. AR square should be equal to A plus D. And you have another equation that is AR raised to power 4 equals A plus 5D. ये आपके पास आ गया. ठीक है. अच्छा, आपको find क्या करना है? Let's think about that.
You want sum of the first 20 terms of the AP. Arithmetic progression का sum find करना है आपको. Arithmetic progression का sum find करना. Now think about this. Arithmetic progression का sum का formula क्या होता है? So we have to do this with the end in mind. हमें करना क्या है? Eventually हमें ये sum find करना है. n/2 into 2a plus n-1 times d. इस फॉर्मूला के अंदर हमने जाके वैल्यूज इनपुट करनी है. हमें इसमें n की वैल्यू पता होगी, 20 होगी, n 20 डाल देंगे. ठीक है, a की टर्म्स में आंसर देना है तो a भी हम एज इट इज रहने देंगे. राइट, उसने कहा a की टर्म्स में आंसर देना है तो a की वैल्यू भी नहीं चाहिए हमें. व्हाट डू वी नीड फॉर दिस फॉर्मूला नाउ? वी नीड द वैल्यू ऑफ d. हमें d इवैल्यूएट करना है इन दो इक्वेशंस. हमें d फाइंड करना है, देन वी कैन फाइंड द सम इन टर्म्स ऑफ a. राइट, सो हाउ डू यू फाइंड d फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? हम क्या कर सकते हैं, हमें r को एलिमिनेट करना है बेसिकली. राइट, r तो हमें नहीं चाहिए AP के फॉर्मूला के लिए, r को एलिमिनेट करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक r द सब्जेक्ट एंड देन गेट रिड ऑफ दैट. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से दिस इज r स्क्वायर इक्वल्स a plus d over a. That's basically the same thing as saying हर टर्म को a से डिवाइड कर दूं अगर मैं, that's 1 plus d over a. This is r square. Now if I wanted, I could evaluate r from this by taking square root on both sides. लेकिन right side पे देखो मुझे क्या चाहिए, r raised to power 4. I can just input this directly there. ये जाके मैं second equation में डाल देता हूँ. I can say I've got a r square into square, a r square का square, that equals a plus 5d. इसमें r square की वैल्यू डायरेक्टली इनपुट कर देता हूँ मैं. If you wanted, आप स्क्वायर रूट करके कर सकते थे, फिर raised to power 4 करते, that would have been okay as well. That's fine. लेकिन क्योंकि आपको r power 4 ही चाहिए यहाँ पे, तो आप r square डायरेक्टली इनपुट कर दो वहाँ पे. r square की वैल्यू क्या है? This is 1 plus d over a whole squared, that equals a plus 5d. अब हमें क्या करना है, हमें d फाइंड करना है यहाँ से. ठीक है, तो अब d को सब्जेक्ट बनाना है. Let's figure this out. What we can do here is we can expand this. उनके स्क्वायर रूट लेने का फायदा नहीं. स्क्वायर रूट लेने से क्या होएगा, we are just going to स्क्वायर रूट लेने से we are going to end up having a square root here, जो फिर complicated हो जाएगा. We are not going to do that. तो हम क्या करेंगे, एक तो a को जाके डिवाइड कर दें दूसरी साइड के ऊपर. Why can we do that? We can do that because यहाँ पे बताया है सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, तो हम a से डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे a को मैंने वहां पे जाके डिवाइड कर दिया, अगर तो मेरे पास क्या मिल गया, राइट साइड के ऊपर I've got 1 plus 5d over a. राइट, अब ये लेफ्ट साइड को एक्सपैंड कर ले, ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. दिस इज a plus b whole square, that's 1 plus 2 into d over a plus d square over a square. ठीक है, now I want to get rid of the fraction खत्म करनी है. What I can do for that is I can multiply the whole equation by a square. a square से मैं पूरी equation को multiply कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a square plus 2ad plus d square, that equals a square plus 5d, or you can say 5ad. So what I've done is I've multiplied the whole equation by a square. Why? To get rid of the fraction. a square आपके पास LCM आ रहा है ना एक तरह से डिनोमिनेटर्स का. a square से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, we get this. अच्छा, a square तो पहले कैंसिल हो गया, हम ऊपर भी वैसे 1 1 कैंसिल कर सकते थे. a square and a square ये माइनस होके एलिमिनेट हो जाएंगे. What are we left with? We're left with d square, 2ad and minus 5ad, that's going to be minus 3ad, that equals 0. What we can do now is we can take d common, and that gives us d minus 3a inside. Either d equals 0 or d equals 3 times a. We are getting two values of d here. d equals 0, d equals 3a. ये दो हमारे पास d की possible values आ रही हैं. Now think about this. Is d equals 0 possible? Now this is where this comes in handy. उसने कहा सारी terms एक तो positive है and they're not all equal. Positive से हमें पता चला था पहले कि a की value 0 नहीं हो सकती. Not all equal, that means अगर difference 0 हो जाएगा,
अगर मेरे पास डिफरेंस 0 हो जाएगा तो AP वाली सारी टर्म्स तो इक्वल हो जाएंगी. So that cannot happen. This is not possible. ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है. So you've got D equals 3 times A. डिफरेंस जो है वो 3 है. अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सम फॉर्मूला में इनपुट कर दें. We don't have space on the next page. What I'm going to do is I'm going to do this on this side. Sum formula के अंदर बस D की वैल्यू 3 है, इनपुट कर दें आप. Let's do that here on the side. Sn equals n over 2 into 2a plus n minus 1 times D. You want sum of the first 20 terms. N की जगह पे 20 input कर दें. You get 20 over 2 into 2a plus 19. 20 minus 1 क्या हो जाएगा, 19. Into the difference. What's the difference? Difference is 3 times a. ये आपने जाके वहां पे इनपुट कर दी. Now you just have to simplify this. This is 20 over 2. What does that give you? 10 outside. Inside you've got 2a plus 57 times a. And that's going to be 59 into 10. That's 590 times a. That is the sum of those 20 terms of the AP. That's what we were looking for. Okay? This is how you would approach this. This was a 6-mark question. आपने बस उसने information दी थी, उसे equations बना ली, D in terms of A find कर लिया, and then you put those values in the sum formula. All right, let's move on to the next one now. This was question number 4 from the paper. Let's look at the next one. Now we've got to express 2x squared minus 8x plus 14 in this form. 2 into x minus a whole square plus b inside the brackets. Okay, now that looks slightly odd. What we know to do is we know how to find the completed square form. ठीक है, हम square complete कर सकते हैं, और उसके बाद उसको इस form में किसी तरह से convert कर सकते हैं. That's one way to do it. Another way to do this is आप comparing coefficients use कर लें, इसको expand कर लें, इस पूरे को expand कर लें, अंदर आ जाएगा x square minus 2ax plus a square plus b, and then compare the like terms on both sides. उससे आपके पास a और b की values आ जाएंगी. You can do it that way as well. So that's your choice. हम completing square वाला method लगा देते हैं. That's what I'm going to do here. Completing square वाला method कैसे apply करते हैं? We first take the coefficient of x square out, common outside. We have x square minus 4x plus 7 left inside. ठीक है? अब क्या करेंगे? Bracket के अंदर we're going to halve 4, square it, उसको add भी कर देंगे और subtract भी कर देंगे. ठीक है? It's your choice if you want to take 7 inside the bracket or leave it outside. वो आपकी मर्जी है. It doesn't really matter. यहाँ पे क्योंकि end पे मुझे end पे सब कुछ अंदर चाहिए, I'm just keeping this inside. ठीक है? That's going to be quicker. Plus 7 and I've got this. ठीक है? अच्छा. Now these three terms are going to give me a perfect square. First term say I'll take x, second term say I'll take this minus sign, third term say I'm going to take this value inside the square, and that's going to give me x minus 2 whole square. What I'm left with outside, minus 2 ka square, that's minus 4 plus 7, and that gives me 2 into x minus 2 whole square plus 3 inside the bracket. अब उसने जो फॉर्म आपसे मांगी है उसमें ये कांस्टेंट जो है that is inside the bracket, तो आपने इसको as it is रहने देना है. This is your final result. ठीक है? This is not the standard completed square form, लेकिन इसने इस फॉर्म में कहा था, ये आपने इसको इस तरह से लिख दिया. ठीक है? That's what you wanted to do in this part. Let's look at the next part. It says the functions f and g are defined like this. ये आपको नजर आ रहा है. f of x equals x square and g of x equals 2x square minus 8x plus 14. That's actually what we had in the first part here. इसका हमने square complete किया था, pretty much. Now it says describe fully a sequence of transformations that maps f of x onto the graph of g of x. f of x को map करना है g of x के ऊपर, making clear the order in which the transformations are applied. So the order is important.
अच्छा, so let's write that down. f of x is x square. ये g of x बन गया है. Now we have converted g of x to this form, तो ऊपर वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं. हमेशा आपको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ही चाहिए होती है ट्रांसफॉर्मेशंस का सोचने के लिए, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आपके पास आ रही है. इट्स नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, कीप दैट इन माइंड. x minus 2 whole square plus 3. This is what we got there. ठीक है. अच्छा, now let's think of the transformations that are happening. अगर फंक्शन के अंदर कुछ हो रहा हो, यानी x को किसी और चीज से रिप्लेस कर दें, that's called horizontal transformation. Horizontal transformation हमारे पास कौन कौन सी हैं? x की जगह पे क्या आ गया हमारे पास? x minus 2 आ गया. एक चीज तो ये हो रही है, x is becoming x minus 2. What kind of transformation is that? That's a translation. That's a horizontal translation. That's a horizontal translation. इसका वेक्टर क्या होगा हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का? -2 का मतलब क्या होता है? -2 का मतलब क्या होता है? वी मूविंग टू द राइट, राइट पे मूव कर रहे हैं. नाउ इन द रीसेंट मार्किंग स्कीम्स, इफ यू सी, they no longer allow you to write shift 2 units right. अगर आप ये लिखेंगे, you'll not get the mark for this. आपने इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करना. They specifically want the translation vector. आपको वेक्टर ही देना है वहां पे. वेक्टर नहीं लिखेंगे, you'll not get the marks. You have to write down the vector here. The vector क्या होगा? It's going to be 2 0, because right side पे मूव कर रहे हैं 2 units. That's 2 0. That's one transformation that's happening. Horizontal transformation सिर्फ एक ही हो रही है. You can just leave it like that and that's okay. Okay, उसमें तो ऑर्डर पे है नहीं. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपस में ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप जो मर्जी पहले कर सकते हैं. अगर मल्टीपल हॉरिजॉन्टल हो फिर ऑर्डर मैटर करता है, मल्टीपल वर्टिकल फिर ऑर्डर मैटर करता है. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपस में ऑर्डर डज नॉट मैटर. आप जो मर्जी पहले कर सकते हो. तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास सिर्फ एक ही थी यहाँ पे. दैट्स दिस ट्रांसलेशन. I can just write that here. Let's say that's the first transformation that's happening. Okay, I can write it like that. Now let's think about the vertical transformations. Vertical transformations मेरे पास क्या क्या हो रही हैं? I've got two things happening here. I've got this +3, एक ये चीज हो रही है, and then I've got this multiplication by 2. फंक्शन के बाहर ये दो चीजें हो रही हैं. ठीक है. Now remember, vertical transformations में हम क्या कहते थे? आप स्ट्रेच पहले करते हो, ट्रांसलेशन बाद में करते हो. But this is not the standard form. Standard form क्या होती है? Standard form आपके पास होती है इस तरह से कुछ हो कि फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, और फिर उसके बाद कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है. यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स हैं, इस तरह से ब्रैकेट्स लगे हुए हैं. तो उसने फोर्स किया है कि आपकी ट्रांसलेशन पहले हो, क्योंकि +3 पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा और बाद में आप बाहर वाली स्ट्रेच कर रहे होगे. राइट. सो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता था? हम स्ट्रेच पहले करते थे, ट्रांसलेशन बाद में करते थे. अब क्योंकि यहाँ पे उसने ब्रैकेट्स लगा दिए और उसने फोर्स किया कि +3 पहले हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी. सो विल से ट्रांसलेशन क्या हो रही है यहाँ पे? दिस इज +3. फंक्शन के बाहर आप 3 ऐड कर रहे हो, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? इट्स ट्रांसलेशन. इट्स अ वर्टिकल ट्रांसलेशन. और इसका वेक्टर क्या है? +3 है. सो वी आर मूविंग 3 यूनिट्स अप. वेक्टर क्या लिखेंगे? 0 3. That's the second transformation that's happening. If you wanted, you can combine these two. You can say this is 2 3. You could do that, but individual is also fine. This is the second thing that's happening. यहाँ पे order important है कि पहले ये vertical translation होगी, उसके बाद stretch होगी. Stretch क्या है? You're multiplying by 2 here, so you say it's a vertical stretch. Third transformation क्या हो रही है? It's a vertical stretch with scale factor 2. स्केल फैक्टर लिखना जरूरी है. यहाँ पे आपके 2 मार्क स्ट्रेच के आएंगे. एक आपसे वो वर्टिकल स्ट्रेच का मार्क होएगा, एक आपको स्केल फैक्टर का मार्क मिलेगा. So these are the transformations that are happening here. This is one way to do it. This is one way to do it. आप इस तरह से ये transformations describe कर सकते थे. There's another possibility. There's another possibility, and that other possibility is
कि आप इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं. लेट मी शो दैट टू यू एज वेल एंड दैट्स आल्सो गोइंग टू बी इक्वली वैलिड. आप क्या कर सकते थे, आप g of x को इस तरह लिख लेते हैं. आप g of x को लिख लेते हैं 2 into x minus 2 whole square plus 6. तो आपने वो इवेल्युएट कर लिया, ये कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, जिस तरह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है. अगर आप ये करते हैं, अब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन तो वही है. सो पहली आपकी ट्रांसलेशन आ गई हॉरिजॉन्टल, जस्ट लाइक बिफोर, दैट्स 2 0. लेकिन अब वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में ऑर्डर चेंज हो जाएगा. अब ये स्टैंडर्ड ऑर्डर आ गया, बिकॉज पहले ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसके बाद ये आपकी एडिशन हो रही है. वर्टिकल में ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रेच पहले करते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, और ट्रांसलेशन बाद में करते हैं. नाउ वी कैन राइट इट एज कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, it's a vertical stretch. So it's important to write clearly vertical stretch. Direction यहाँ पे important है. Vertical stretch with scale factor 2, and then we have a vertical translation. और उसमें वेक्टर अब क्या हो जाएगा, 6 vertically, so that's going to be 0 6. अब इसमें ट्रांसलेशन का भी इकट्ठा भी नहीं लिख सकते, बिकॉज ऑर्डर आपका डिफरेंट है. पहले ये एक ट्रांसलेशन हो रही है, उसके बाद ये स्ट्रेच हो रहा है, उसके बाद वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है. दिस कुड बी अनदर वे ऑफ राइटिंग दैट. दिस कुड बी अनदर वे ऑफ राइटिंग दैट. ओके, तो ये दोनों वैलिड हैं. आप ये राइट वाला कर सकते हैं. अगर आप 6 ट्रांसलेशन यूज करते हैं वर्टिकली, तो ट्रांसलेशन बाद में होगी, या फिर और अगर आपके पास ये इस तरह से इस फॉर्म में करते हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन पहले करेंगे और स्ट्रेच बाद में करेंगे. बोथ आर वैलिड. ओके, दिस इज नॉट सर्कल, ये सर्कल तो नहीं है. नहीं, स्ट्रेच फैक्टर तो यहाँ पे 2 होगा. वर्टिकल के अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वही आपका स्ट्रेच फैक्टर होता है. हॉरिजॉन्टल में इट्स द रेसिप्रोकल. अगर आपके पास f of x की जगह पे f of 2x आ जाए, x किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें स्ट्रेच फैक्टर आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के अंदर वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो 1/2 हो जाता है. वर्टिकल के अंदर वही नंबर होता है, जो नंबर आ रहा होता है उसी से मल्टीप्लाई करना, वही आपका स्ट्रेच फैक्टर होता है. ओके, दैट्स हॉरिजॉन्टल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हाशिम. ओके, ठीक है. सो दैट्स दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इसका सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी था. व्हाई? बिकॉज ऑर्डर यहाँ पे आपको उसका ध्यान रखना था कि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि मल्टीपल है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है. यू हैड टू राइट द करेक्ट ऑर्डर देयर. ओके, all right, let's move on to the next one. This is question number 6. Now we've got a circle here. X plus 1 whole square plus y minus 2 whole square equals 85. इसने आपको एक circle की equation दी हुई है. We have a straight line that has this equation. You can see that as well. They're shown in the diagram. The line intersects the circle at A and B. So you've got these 2 points where the line intersects the circle. And the center of the circle is at C. Okay, so ये भी आपका center नजर आ रहा है. सबसे पहले वो क्या कहते हैं आपसे, find the coordinates of A and B. Now what are A and B? A and B are points of intersection. A and B are points of intersection of the circle and the straight line. ठीक है, points of intersection कैसे find करते हैं? आप उनको simultaneously solve कर लेंगे. So that's what we do here. We've got the equation of the circle. X plus 1 whole square plus y minus 2 whole square equals 85. And we've got the equation of the line, that is y equals 3x minus 20. अब ये y already subject है, उसके अंदर उसको जाके इसमें input कर दें, y की जगह पे 3x minus 20 डाल दें. ठीक है, so what do we get when we do that? X plus 1 whole square plus 3x minus 20 minus 2 whole square, that equals 85. Let's solve this now. You get x square plus 2x plus 1. This is going to be 3x minus 22 whole square equals 85. Let's expand this further. X square plus 2x plus 1 plus 3x ka whole square. That's going to be 9x square minus 2 into 3 into 22. What's that? That is 132 minus 132x plus 22 squared. That is 484. And we subtract from that 85. That's coming from the other side. Okay, let's simplify this. X square 9x square, that's going to be 10x square. X terms kya aa rahi hai? 2 minus 132, that's going to be minus 130x. And then the constants, we've got 1 and 484 minus 85.
These are the only three terms that we have. Yeah. So what do we get from this? We get 400. ये आपके पास equation आ गई. Now we can simplify this equation. 10 से divide कर दें. We have x squared minus 13x plus 40 equals 0. ठीक है? It's a quadratic equation. कैसे solve करें? It's paper 1. It's absolutely necessary that you show complete working for this. तो आप क्या करोगे? आप या तो factorize कर लो या quadratic formula के अंदर values input कर दो. Now can we factorize this? 40 के factors क्या हो सकते हैं? 8 5 is going to work here. Yeah, so 8 and 5 work here. X squared minus 8x minus 5x plus 40 equals 0. We can factorize this. We get x into आपके दो factors क्या आ जाएंगे? x minus 8 आ जाएगा. दूसरा factor क्या आ जाएगा? x minus 5. x equals 8 और x equals 5. अच्छा, उसने कहा था find the coordinates of a and b. That means you need the y coordinate as well. इसने आपको सिर्फ x coordinate नहीं मांगे, y coordinate भी चाहिए. इसको इसमें input कर दें आप. y equals 3x minus 20. So we say y equals 3 into 8 minus 20. That's going to be 24 minus 20, which is 4. And here we get y equals 3 into 5 minus 20. And that gives me minus 5. The value of y is minus 5 here. The two coordinates that we were looking for, they are 8, 4, and 5 and minus 5. Yeah, plus 2 points आगे. Now you can look at the figure and see कि अच्छा कौन सा a होना चाहिए, कौन सा b होना चाहिए. b का y coordinate negative है. So the one with the y coordinate negative, that should be b. So ये second वाला आपका b होना चाहिए. This is b and this is a. ये आपने दोनों के coordinates find कर ली. ठीक है? All right, good. Thank you, Afi. Yeah, so that's 8 and 5. You have to show your working. यहाँ पे working नहीं show करेंगे. अगर आप factorization वाला part नहीं show करेंगे, you will not get marks. Okay, quadratic equation solve करना आपके syllabus का part है. You have to show that. Answer के marks भी नहीं मिलेंगे फिर अगर working नहीं show करेंगे तो. Okay, let's move on to the next part. Find an equation of the circle which has its center at C and for which the line with the equation y equals 3x minus 20 is a tangent to the circle. Okay, now let's think about this. Center C है. Figure से सोचना थोड़ा सा आसान होएगा. This is the center, still the same center. But now the line with the equation y equals 3x minus 20, जो ऊपर line नजर आ रही थी आपको, that is a tangent to the circle. So what is it going to look like? It's going to be a circle that looks like this. इस तरह का कोई circle होएगा. Unfortunately, my drawing is not very good. What I'm going to do is I'm just going to draw a circle here on this side and try to move it here. Hopefully that will work. Okay, let's increase the size a bit. Increase it more. Now, of course, it doesn't have to be very accurate. It's just for your own understanding. इसको सब अपना सोचने के लिए आपने इसलिए बनाया. This is the circle that we're talking about. यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? ये tangent बन रहा है इस point के ऊपर. अच्छा, now you're not going to assume कि ये x axis के ऊपर आ रहा है. ये assumption नहीं लेनी. Figure पे लग रहा है इस तरह से, but it's not necessary. ठीक है? Figure पे जो आपने drawing किया उससे assume नहीं कर लेना ये कि ये x axis के ऊपर ये point होना चाहिए जिस पे वो tangent बन रहा है. ठीक है? You're not going to take that assumption. However, how can you find the point where you have this tangent? Now think about this. We know कि what can we do here? हमें पता है कि CA or CB, they are equal to each other. They're equal to each other, right? And yeah, so we know CA and CB are equal to each other. That's what we know because they are both radii. बड़े वाले circle के radius है दोनों. And now if I join C with this point, ये जो अंदर वाले छोटे वाले circle का radius बन रहा है,
ये एंगल जो मेरे पास बन रहा है कितना है? दिस इज सपोज टू बी 90 डिग्रीज। व्हाई? बिकॉज रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 होता है, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स, आपके पास कॉर्ड है, एक कॉर्ड कौन सी है? ए बी कॉर्ड इज मेकिंग, ए बी कॉर्ड के किसी पॉइंट के ऊपर आपका सेंटर के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो ये कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। लेट्स कॉल दिस पॉइंट समथिंग, इस पॉइंट को मैं कुछ कह देता हूँ। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एक्स। ये पॉइंट एक्स है जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए बी का मिड पॉइंट जो होगा वो आपके पास एक्स होएगा। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट एक्स। ठीक है, उससे क्या फायदा होएगा? हमें इक्वेशन चाहिए थी ना, इक्वेशन के लिए सेंटर तो हमारे पास ऑलरेडी है। फर्स्ट इस सर्कल की इक्वेशन तो हम निकाल सकते हैं सेंटर। रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज वन आइडिया कि आप एक्स पॉइंट फाइंड कर लें और फिर आप सी से एक्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, आपको रेडियस आ जाएगा। ठीक है, लेट्स फाइंड द पॉइंट एक्स। एक्स पॉइंट क्या है? अभी हमने क्या डिसाइड किया? दिस इज सपोज टू बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट होना चाहिए। लेट्स यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला हियर। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे अभी यहाँ पे। दोज आर द कोऑर्डिनेट्स। लेट्स यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। 8 + 5/2 and 4 - 5/2. So the coordinates of x are going to be 13/2 and -1/2. So देखें, आपके अगर वो assumption ले लेते कि वो x axis के ऊपर lie कर रहा है, that would have been an incorrect assumption, क्योंकि आपके y coordinate यहाँ पे -1/2 है। This is the point x. x आ गया point। अब हम क्या कर सकते हैं? रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस के लिए क्या चाहिए? हम सेंटर फाइंड करेंगे पहले। लेट्स फाइंड द सेंटर। हम ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पे। इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बिगर सर्कल, व्हाट्स द सेंटर? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें। x - a² + y - b² = r²। आप सिंपली क्या करते हो? जो अंदर नंबर्स लिखे होते हैं इनके साइन फ्लिप कर देते हो। सो सेंटर क्या आएगा? c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ रहे हैं? यहाँ से +1 है, इसका साइन फ्लिप कर दें, दिस इज -1, दिस इज -2, इसका साइन फ्लिप कर दें, दिस इज 2। द सेंटर्स कोऑर्डिनेट्स आर -1 and 2। ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है, अब cx की लेंथ फाइंड कर लें, बिकॉज उससे आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा ग्रीन सर्कल का। ठीक है, लेट्स फाइंड द लेंथ cx। I'm going to write the coordinates of c here as well. c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -1 and 2। अब आप क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन यू हैव टू शो द वर्किंग फॉर दिस, डोंट जस्ट राइट डाउन द डिस्टेंस डायरेक्टली। आपने फॉर्मूला के अंदर इनपुट करनी है वैल्यू cx, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। 13/2 is basically 6.5। आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, that's perfectly okay. This number -1, that's going to be +1 whole square, plus y2 - y1 -1/2, that's -0.5 -2 whole square. Let's evaluate this. इसको evaluate कर लें। 7.5 square plus 2.5 square, इसका square root. I'm getting I'm getting a value in decimals. I'm getting a value in decimals as well, but I'm getting an exact value as well. I should be using exact value because जब equation लिखते हैं ना कोई भी, उसमें decimals में value हम नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वो अगर especially अगर वो exact नहीं आ रही हो। ठीक है, तो ये जो exact value है that's not मतलब जो decimal में value है वो exact नहीं है, वो irrational number है, exact नहीं आ रहा। तो आपने इसकी fraction जो आएगी calculator से directly, मेरे पास आ रही है 5 square root of 10/2। That's what you're going to write here. This is your distance. ठीक है, ये आपके पास distance आ गया c और x का। This is supposed to be your radius. ठीक है, ये आपका radius है circle का। So now we've got the center. This is the center, and we've got the radius. Standard form के अंदर input कर दें। x - a² plus y - b², that equals r². What do we get from this? X minus a, so this is a, this is b, minus -1, that's going to be x + 1 whole squared,
plus y minus b, that's y minus 2 whole square, that equals radius का square, which is 5 into square root of 10 over 2 का whole square. ठीक है? Now you're not going to leave it like this. आप इसको simplify करोगे right side को, left side को simplify करने की जरूरत नहीं है, लेकिन right side को आपको simplify करना है इसको, x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square. ये evaluate कर लें right side पे क्या आता है, whatever you were getting earlier उसको square कर दें. I'm getting 125 over 2. So you're going to write 125 over 2 here, and that's the equation of the circle. This is the equation of the circle. इसको decimals में नहीं लिखना आपने. यहाँ पे अगर decimals में लिखेंगे आपकी exact value नहीं आएगी end पे, and that's going to be a problem. You'll lose 1 mark. Okay, so that's the equation of the circle in this part. Okay, all right. Yeah, so that's it for this question. Let's move on to the next one. Now we've got trigonometry. We have to first show that this thing on the left side is equal to this thing on the right side. अच्छा, left side से start करते हैं. We've got the left side more complicated. इससे start करते हैं, and let's see what we get. So सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? We can just take LCM. हमें single fraction चाहिए तो LCM ले लेते हैं. Let's see what we get from that. We've got sine and cos here, and sine and cos. Square नहीं बन जाएगा, इसको multiply करना पड़ेगा पूरा. Let's do that. Sine theta plus 2 cos theta into cos theta plus 2 sine theta. We've got a negative sign in the middle. Be careful about that. Minus sine theta minus 2 cos theta into cos theta minus 2 sine theta. In the denominator, we've got the product cos theta minus 2 sine theta into cos theta plus 2 sine theta. अब देखिए, आप शुरू में देख रहे हैं इसको सिर्फ, it's not really clear कि आप exactly किस तरह से left side को right side के से equal कर सकते हो. But what you do is you just think about this कि left side पे 2 fractions हैं, right side पे 1 fraction है. Just take the LCM and see what happens, right? So hopefully this will work out. We normally start between 8:45 and 11. 8:45 11 के दरम्यान में start होती है. किसी time पे today I got a bit late, but normally I start around 10:55 or something. उसके आसपास. ठीक है? Thank you, Anya. Okay, let's do this. Let's simplify this. What do we get? We get sine theta into cos theta plus 2 sine square theta plus 2 cos square theta. Simple multiplication करें. And then we have plus 4 sine theta cos theta. Please correct me if there's any error somewhere. You just have to be very careful. फजूल में कोई mistakes ना हो या छोटी. अच्छा, then we have a negative sign. अब आपने क्या करना है? इस पूरे expression को bracket के अंदर रखना है ताकि अब बाद में फिर minus से multiply कर दो उसको. Let's do this multiplication. Sine theta into cos theta minus 2 sine square theta minus 2 cos square theta plus 4 sine theta into cos theta whole divided by cos theta minus 2 sine theta. अच्छा, denominator को remember हम क्या कहते थे? We would like not to factorize it अगर end पे हो सकता है कोई हमारी वो हो रही हो, cancellation हो रही हो, तो अभी इसको factorize नहीं, अभी इसको multiply नहीं करते, अभी इसको as it is रहने देते हैं. हो सकता है बाद में जाके कोई हमारी cancellation हो रही हो. ठीक है? So let's leave it like this and then we'll see at the end हम इसको multiply करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अच्छा, let's do this now. Numerator में क्या आ गया हमारे पास? Sin theta and 4 cos sin theta cos theta and 4 sin theta cos theta. ये क्या हो जाएंगे? ये 5 sin theta cos theta हो गए. अच्छा, think about this. This is 2 into sin square theta plus cos square theta. That's basically 1. So 2 into 1 हो जाएगा. But let me just write that down here just for clarity. 2 into, अगर मैं यहाँ से 2 common ले लूँ
I get 2 sin square theta plus cos square theta. ये आ गया. अब ब्रैकेट्स के अंदर क्या है मेरे पास बाद में? Sin theta plus 4 sin theta cos theta. That's going to become 5 sin theta cos theta. And these two terms, again, I can take minus 2 common from this. ये क्या बन जाएगा? Sin square theta plus cos square theta. Why am I doing that? Because I know कि sin square plus cos square क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. डिनोमिनेटर में गॉट द सेम थिंग. आप ये भी कर सकते हैं, आपने पहले न्यूमरेटर अलग से इवैल्यूएट कर लें, आपको अदरवाइज आपको डिनोमिनेटर बार बार लिखना पड़ रहा है यहाँ पे. दैट माइट वेस्ट योर टाइम. और इसका एक और तरीका ये भी होता है, अगर यहाँ पे कोई सिर्फ कॉस थीटा साइन थीटा आ रही है ना, मतलब थीटा एंगल सब में सेम आ रहा है, अगर तो आप क्या कर सकते हो, आप साइन की जगह एस यूज कर सकते हो, कॉस की जगह सी यूज कर सकते हो, अगर टैन आ रहा हो तो उसकी जगह टी यूज कर लो, बट ओनली व्हेन द एंगल इज सेम. अगर एंगल सेम आ रहा है सब में तब आप ये कर सकते हो. दैट विल अगेन सेव सम टाइम, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा. सो यू कैन डू दैट इफ यू वांट. ओके, अच्छा, आई वाज जस्ट अबाउट टू डू दिस मिस्टेक हियर. cos थीटा माइनस 2 sin थीटा होना चाहिए था यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस 2 sin थीटा. अच्छा, लेट्स सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर ना. न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया? 5 sin थीटा ये वाला, और ये देखिए माइनस है यहाँ पे, और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे. लेट मी एक्चुअली डू इट इन द नेक्स्ट स्टेप. 5 sin थीटा cos थीटा प्लस 2, ये देखिए ये तो 1 ही है ना, इट्स जस्ट गोइंग टू बी 2 minus 5 sin theta cos theta. Again, this is 1. ये 1 हो गया. We've got this negative sign outside. This negative sign, minus plus हो जाएंगे. So we have 2 into 1. In the denominator, we still have the same thing. Cos theta minus 2 sin theta into cos theta plus 2 sin theta. अच्छा, अब देख लेते हैं. यहाँ पे cancellation हो रही है. ये cancel हो गया. Numerator में क्या आ गया? हमारे पास 4 आ गया. What do we want at the end? We want 4 in the numerator. अच्छा, denominator में क्या है? आपके पास square आ रहा है. So we have to basically multiply this. इसको multiply करेंगे. We should get a square. Let's see what happens when we do that. अब denominator को multiply कर देंगे, because हमें पता है cancellation कोई नहीं हो सकती. अब denominator को हम आगे simplify कर देंगे. ठीक है? So this is going to become cos theta whole square minus 2 sin theta whole square. ठीक है? a minus b into a plus b है ना, तो a square minus b square हो गया. What do we have then? 4 in the numerator. In the denominator, we've got cos square theta minus 4 sin square theta. अब हमें क्या चाहिए denominator में? Denominator में चाहिए only cos square, sin नहीं चाहिए, तो sin square को convert कर लेते हैं. Sin square को हम लिख लेते हैं 1 minus cos square theta, and that gives us 4 over cos square theta minus 4 plus 4 cos square theta, and that gives me 4 over 5 cos square theta minus 4. Now, since it's a question in which you've got to show something, please do not skip steps. Do not skip steps, otherwise you'll lose marks. For example, some people do this कि उनके पास ये आ गया, अगर ये चीज आ गई, they end up writing this thing directly कि अच्छा दिमाग में सोच लेते हैं अच्छा sin square 1 minus cos square हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा. You will not get this mark for this, क्योंकि आपने शो करना है. आपको पता है फाइनल आंसर क्या है, एग्जामिनर आपकी वर्किंग बहुत केयरफुली चेक करेगा, एक स्टेप आपको शो करना है. ठीक है ना? ऑफ कोर्स यू कैन डू सम थिंग्स क्विकली, जो प्लस माइनस वाली चीजें हैं वो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जहां पे आपकी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपने क्लियरली शो करना है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. अदरवाइज यू कैन एंड अप लूजिंग मार्क्स फॉर दैट. ओके. Yes, Vanya, what I'll do is I'll share that on the WhatsApp group as well. वो group में share कर दूंगा, and I'll hopefully, if somebody reminds me at the end, मैं यहाँ पे there'll be description में link भी post कर दूंगा YouTube पे at the end of the session. अच्छा. Now it says hence solve this equation. Hence solve this equation. Now what's this equation? On the left side, we've got exactly the same thing that we had there. ये हमने प्रूव कर दिया कि ये किसके इक्वल है. दिस इज 4 over 5 cos square theta minus 4. तो इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास? दिस इज 4 over 5 cos square theta minus 4 equals
5। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, डिनोमिनेटर को वहां पे जाकर मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट 4 = 25 cos square theta minus 20, and that gives me 25 cos square theta equals 24. Cos square theta equals 24/25. Now take square root on both sides. Remember, whenever we take square root, what do? We put plus minus. ठीक है, plus minus यहाँ पे जरूर आपने input करने. Let's see what we get from this. 24/25 and square root of that. यहाँ पे आपको exact answer तो नहीं चाहिए, तो इसका डेसिमल में convert कर लेंगे. Exact आप निकाल भी नहीं सकते हो. Cos theta equals plus minus 0.9799 again, so it's actually going to be 98. This is what I'm getting. ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास ये आ गया, ठीक है. अच्छा, प्लस माइनस दिस. नाउ व्हाट डू वी डू एट दिस पॉइंट? बेसिक एंगल निकाल लेते हैं. cos alpha, बेसिक एंगल के लिए क्या करते हैं? We just use the positive value 0.9798. What's the range that we're given? The interval is 0 to 180 degrees, and so we have to be using degrees here. Keep that in mind. Let me evaluate this. Angle input degree, cos inverse of point, or cos inverse of the answer that I got there. Cos inverse of this gives me 11 point. Alpha equals 11.54 degrees. ये मेरे पास alpha आ गया, ठीक है. This is the basic angle. अब देखते हैं हम कौन से coordinates में हो सकते हैं. Now cos theta can be plus minus, दोनों हो सकते हैं. So basically we can be in any of the 4 quadrants. किसी भी quadrant में हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि interval 0 से लेकर 180 तक है, we say we have to be either in the first or in the second. दोनों में हो सकते हैं. This is 11.4, this is alpha. यहाँ पे एक value आएगी, एक वैल्यू आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी. फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होगी? वी हैव थीटा इक्वल्स 11.54 फ्रॉम देयर, एंड देन इन द सेकंड क्वाड्रेंट वी हैव गॉट थीटा इक्वल्स 180 minus 11.54, and that's going to give me 168.46 degrees. ठीक है. इसमें क्वेश्चन में उसने कोई एक्यूरेसी नहीं बताई है आपको, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, या फिर एटलीस्ट 1 डेसिमल इसका राउंड ऑफ. अगर आप करते राउंड ऑफ, यू विल से 11.5 डिग्रीज है एंड 168.5 डिग्रीज है. 1 डेसिमल प्लेस से कम नहीं लग सकते डिग्रीज के अंदर, ठीक है. दैट्स व्हाट योर फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी हियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Next question, this is question number 8. The diagram shows the circle with equation x minus 2 whole square plus y square equals 8. The chord AB of the circle intersects the positive x-axis. So again, we got a circle. This is the second circle equation. That's weird. The diagram shows the circle with equation x minus 2 whole square plus y square equals 8. The chord AB of the circle intersects the positive x-axis, positive y-axis at A. You can see that here. And it's parallel to the x-axis, so it's horizontal. So gradient 0 है. Find by calculation the coordinates of A and B. Okay, now how do you find these coordinates? It's only 3 marks. How do we think about this? A point तक पास आ जाएगा directly. A is the y-intercept. तो आप इस circle की equation में y को 0 कर दें. That's how we can start. Okay. Let me do that here. Coordinates of A. मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है x minus 2 whole square plus y square equals 8. I can just input the value of y equal to 0. Sorry, x equals 0, not y. Y intercept find करना है, तो x की value 0 input करेंगे. We say x equals 0. When you input x equals 0, we get 0 minus 2 whole square plus y square equals 8, and that becomes y square equals 8 minus 4. Or let me just do it on the other side. minus 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये आ गया. y square equals 4. y equals, when we take square root, we get plus minus. ठीक है, लेकिन अब आप देखें ग्राफ पे जाके, a is above the x-axis, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपने कंसिडर करनी है. a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे
0 and 2. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो -2 वाला है दैट्स बेसिकली दिस पॉइंट, ये -2 आ रहा होगा आपके पास, ऊपर वाला पॉइंट 2 होगा। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 and 2। नाउ वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। नाउ वन आइडिया इज कि आप इसके अंदर इनपुट कर दें, क्या वैल्यू इनपुट कर दें, ये लाइन की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, दिस इज y इक्वल्स 2। तो y इक्वल्स 2 आप इस फंक्शन के अंदर इनपुट कर दें, आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। दैट्स वन वे टू डू इट। अनदर वे इज, आपको पता है सेंटर क्या है सर्कल का, सेंटर देखें सर्कल का क्या होएगा 2 and 0। बेसिकली यहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है सर्कल का, राइट, दिस इज पॉइंट 2, ये आपका सेंटर है सर्कल का। तो बेसिकली ए बी हॉरिजॉन्टल है, आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है लेफ्ट साइड के ऊपर 2 यूनिट्स, तो इसका राइट वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी 2 यूनिट्स होगा। सो इफ दिस इज 0, बी बेसिकली कहाँ पर आ रहा होगा, ये 4 पे आ रहा होगा। तो आप बी के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली लग सकते हो, आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत भी नहीं है। बी क्या हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है वहां से सेंटर क्योंकि यहाँ पर आ रहा है मिडिल में, दिस इज 2 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि ए बी हॉरिजॉन्टल है, राइट साइड पे 2 यूनिट्स होना चाहिए। सो बी के कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी 4 on the x-axis and 2 on the y-axis. That's going to be 4 and 2. इस पे सिर्फ आंसर लिखने का मार्क होएगा आपका, 4 2 ये आपके b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। This is one way to do it, but of course if you don't get that reasoning, if you don't figure out that reasoning during the exam, आप क्या करोगे, आप x minus 2 whole square plus y square equals 8 के अंदर y की वैल्यू 2 इनपुट कर दें, y की वैल्यू 2 इनपुट कर दें, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यूज आएंगी दोबारा से। अगर y इक्वल्स 2 इनपुट करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आ रही होगी 0 आ रही होगी आई थिंक, और एक वैल्यू आ जाएगी 4 वाला पॉइंट आपका b हो जाएगा, राइट। सो दैट्स द अदर वे टू डू दिस, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इससे भी आपके कोऑर्डिनेट्स वही आ जाएंगे 4 and 2, and that also works. All right, I hope that makes sense. Let's move on to the next part. Okay, so now we've got to find volume of revolution. तो सर्कल के साथ उसने volume of revolution दे दिया। How do we think about this? Volume of revolution in the shaded segment. Let's see what's shaded. So this shaded segment is rotated 360 degrees about the x-axis. Okay, now that looks a bit tricky, but what you have to do is we have to just use the standard formula that we've got for volume of revolution. Volume of revolution में क्या formula होता है हमारे पास? It's pi y square dx. Volume of revolution about x-axis. What's the formula? You can write that down. Your formula sheet पे नहीं दिया होता. You have to remember this. Volume of revolution about the x-axis, that is pi into integral of y square dx. Now, how do you evaluate this? आपके पास देखिए दो ग्राफ्स हैं, एक आपके पास ये सर्कल है, शेडेड पार्ट के ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है शेडेड पार्ट में, दैट्स द सर्कल, और नीचे वाला पार्ट कौन सा है, दैट इज दिस लाइन, द स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होगी, दिस इज y equals 2. Okay, what I'm going to do here is I'm going to write down what's my upper function, ठीक है, like we usually do. Upper function मेरे पास क्या आ रहा है, the upper function is y square, ये circle की equation है, right? x minus 2 whole square plus y square equals 8. Let me use that here. X minus 2 whole square plus y square equals 8. That's the equation of the circle. What we need in the formula is y square as the subject, y square को subject बना लें. We get y square equals 8 minus x minus 2 whole square. You can leave it like this if you want, or you can simplify this. That's your choice. Integrate, आप इसको directly भी कर सकते हैं, इसको simplify करके भी कर सकते हैं. Both are okay. अच्छा, ये आपके पास upper curve आ गई. This is the green part there. Sorry, this is the green part there on the graph. जो मैंने green में highlight किया, that's the upper graph. What about the lower graph? That's y equals 2. ये y equals 2 line है. So the lower graph is y equals 2. अब formula में मुझे क्या चाहिए होता है? Formula में मुझे square चाहिए होता है. So what I'm going to do is I'm going to square this as well. Y square equals 4. ठीक है.
अब या तो आप इन दोनों के अलग अलग वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड कर लें किन लिमिट्स के साथ, लिमिट्स आपके पास आ रही हैं 0 से लेकर 4 तक, अलग अलग वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड कर लें, सबट्रैक्ट कर लें, और यू कैन डू इट टुगेदर. हाउ? You'll say volume of revolution of the shaded region, that's equal to pi into integral of y square था ना. अब क्या करें, अपर y square में से माइनस कर दें लोअर y square. ठीक है, डायरेक्टली एक ही इंटीग्रल के अंदर इवैल्यूएट कर लें, उसमें डायरेक्टली लिमिट्स इनपुट कर दें. That's going to be slightly quicker, but if you want to do evaluate it separately, that's also fine. Upper y square क्या आ रहा है, 8 minus x minus 2 whole square, and then you've got to be careful about the signs. यहाँ पे तो एक ही टर्म आ रही है, दूसरी अगर मल्टीपल टर्म्स होती आपने पूरा ब्रैकेट में लिखना था, -4 with respect to x. इसको evaluate कर लें, pi into integral of 4 minus x minus 2 whole square with respect to x. This is what we want to evaluate. ये इंटीग्रल हमें evaluate करना है. ठीक है, Any problem with this? This is pretty straightforward now. आप इसको अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो, इसका वॉल्यूम अलग से फाइंड कर लो लिमिट्स डाल के, इसका वॉल्यूम अलग से फाइंड कर लो. If you're more comfortable with that, that's perfectly okay. एंड पे जाके सबट्रैक्ट कर लें. ठीक है, I'm just doing this together. अब लिमिट्स इनपुट कर दे. लिमिट्स क्या है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4. तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और ये लिमिट्स डाल दे. ओके, लेट्स इंटीग्रेट दिस. रिमेंबर पाई बाहर है वैसे. 4 का इंटीग्रल with respect to x is 4x. इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे अंदर वाला पार्ट लीनियर है तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं. व्हाट डज दिस बिकम, x minus 2 पावर इंक्रीज कर दी, पावर 3 होगी, डिवाइड बाय दैट इंक्रीज पावर एंड डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज इनसाइड, दैट्स 1. दैट्स योर इंटीग्रल. एंड नाउ you can input the limits from 0 to 4. Let's input 4 once. 4 input करेंगे तो क्या आएगा, 4 into 4 minus 4 minus 2 cube divided by 3 minus 0 minus 0 minus 2 whole cube divided by 3. That's what we get. Now you have to input these limits. Limits input करके आपने दिखानी है, डायरेक्टली कैलकुलेटर से नहीं करना. You will not get marks for that. ये limits input करने का एक मार्क होता है. ठीक है, लिमिट्स इनपुट करना है, उसके बाद इवैल्यूएट करना है. सो नाउ वी कैन इवैल्यूएट दिस एंड सी व्हाट वी गेट. आई वुड रिकमेंड एक एक ब्रैकेट को अलग अलग इवैल्यूएट कर लें, उसका फायदा ये होगा केयरलेस एरर्स कम होंगे थोड़े से. 16 minus 8 cube divided by 3, I'm getting 40 over 3 in the first bracket. In the second bracket, I have minus 2 ka whole cube. That's 8 over 3. That's going to be minus into minus 8 over 3. And that's giving me pi into 40 plus 8. That's 48 over 3, which is 16 over 3. Sorry, 48 over 3, that is 16. So I'm getting 16 pi from this. Is that okay? Can somebody verify this? I'm just looking at the final result there. Is there any careless error somewhere? Okay, let me go back there. 8 minus x minus 2 whole square. Can somebody spot any error somewhere? I'm just checking the final answer, and that is apparently not correct. Okay, so there is some error somewhere. Oh, okay, y square equals 8 minus x minus 2 whole square. दूसरी equation क्या थी, y equals 2, y square equals 4. And that is okay. Limits are from 0 to 4. Okay, let's figure this out. So we are subtracting that from this, 4 minus this, then we integrate it, 4x minus x minus 2 whole cube divided by 3 and 1. That's also fine. We input the limits. अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है? No, that should be okay.
4 minus 2 whole cube, and then we're subtracting from that the case where we've got 0. Can somebody spot any error in the working? 16 minus 8/3. Okay, yeah, so that's the problem. यहाँ पे sign का मसला है यहाँ पे. Yeah, so this is the problem. यहाँ पे, you see, we've got this negative sign outside. Then you've got this negative sign, and then you've got this negative sign. So there are 3 negative signs here, basically. So the under वाला part positive बन गया यहाँ पे. That's going to be 8/3 because this is negative. ये minus 2 का cube भी negative होएगा. That's going to become positive. So what does this give me? So basically 3 negative signs are this negative, this negative, this negative. Overall, it should have been negative. 40 minus 8, that should be 32/3. 32/3 pi. That's what your volume of revolution should be. Okay, so there was an error here. यहाँ पे negative sign होना चाहिए था, not positive sign. So that's your volume of revolution. This is what we get. Okay, let's move on to the next question. This is our volume of revolution question. Okay, let's move on to the next one. We again have functions. Functions f, g, and h are defined as follows. We've got 3 functions. उसने क्या कहा है? हम देखते हैं functions क्या हैं. F of x, solve the equation f of x equals 0, giving us solutions in this form where a, b, and c are integers. Okay, अब उसने आपसे exact value मांगी है, तो you have to be particularly careful here कि आप यहाँ पे working आपने clearly show करनी है सारी, ठीक है? Working skip बिल्कुल नहीं करनी है. F of x equals 0 ये solve करना है, ठीक है? So that's basically x minus 4x raised to the power 1/2 plus 1 equals 0. Domain दी हुई है, so we have to be careful about that. X greater than or equal to 0. We have to solve this equation. Now, this is a simple quadratic question. आपने क्या करना है? Powers आपकी ratio में 2:1 में. This is 1. Okay, my outputs are not working yet. Let's check. The other one is working. Okay. I hope you can still hear me, right? Okay. X raised to the power 1 minus 4x raised to the power 1/2 plus 1. ये आपके पास quadratic form है एक तरह से. तो आप इसको क्या कर सकते हो? इसमें आप substitution कर सकते हो. जो छोटी पावर है उसको आप किसी और लेटर से आप denote कर दोगे. You'll say let x raised to the power 1/2 equals another variable. I usually use m because that's generally not used in questions. लेकिन यहाँ पे m use हुआ है already. तो आप कोई और letter use कर लें जो use नहीं हुआ हुआ. Let's say u कर लेते हैं. Let u equals x raised to the power 1/2. If we do that, we get u square minus 4u plus 1 equals 0. Now this is a quadratic equation. Solve this quadratic equation. Again, you've got to show your working. Working के बगैर marks नहीं मिलेंगे. Factorization यहाँ पे नहीं होगी most likely because उसने ये वाली form मांगी है तो factorize आप नहीं कर सकेंगे. So you can try if you want. 1 के factors आपको इस तरह 4 नहीं दे सकते. You have to use the quadratic formula. Let's use the quadratic formula. U equals minus into minus 4 plus minus square root of minus 4 whole square minus 4 into 1 into 1. 2 into 1. Again, you've got to show your working here. Don't write the direct answers from here. Direct answers नहीं लिखने हैं. क्योंकि उसने आपसे exact form मांगे, उसमें आपको working चाहिए होती है. 4 plus minus square root of 16 minus 4. What's that going to be? That's going to be 12. Right? 16 minus 4 is 12 divided by 2. Now, what you can do is you can write square root of 12 as 2 into square root of 3. How do you do that? You either put this on your calculator, square root of 12 calculator में डालें, आपको मिल जाएगा 2 square root of 3. That's one way to do it. Otherwise, आप manually किस तरह करते हो? जो भी आपके पास number होता है, उसके आप highest factor देखते हो जो square हो. 12 का biggest factor, that is a square, that is basically 4. So it's 2 square
that's 4 into 3, तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 12 को कैसे लिख सकते हैं? पे 2 को बाहर लिख सकते हैं और अंदर रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, बट इट्स इजी टू जस्ट पुट दिस ऑन योर कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट 12 कैलकुलेटर में डालेंगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ 2 गेट्स कैंसल्ड, 2 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, वो नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट्स द वैल्यू ऑफ u, ये आपकी u की वैल्यू है। आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था x, ओके, x फाइंड करना है, u नहीं फाइंड करना, और आपने सॉल्यूशन जो देने हैं वो इस फॉर्म के अंदर देने हैं। सो नाउ यू गॉट टू वैल्यूज ऑफ u, लेट्स राइट देम डाउन सेपरेटली, एक u इक्वल्स 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड द अदर इज u equals 2 minus square root of 3. Now let's put the substitution back. हमने क्या substitute किया था? u equals x raised to power 1 over 2. So we have x raised to power 1 over 2 equal to 2 plus square root of 3, or x raised to power 1 over 2 equals 2 minus square root of 3. And what do we do now? We have to find the value of x. We will square both sides. दोनों sides को square कर दें ताकि आपके पास x आ जाए उससे, ठीक है। What do we get when we do that? We get x equals 4 plus 2 into 2 into square root of 3. That's 4 square root of 3 plus square root of 3 ka whole square. That is 3. And that gives me 7 plus 4 square root of 3. That's one value of x. What about the other one? X equals 4 minus 2 into 2 into square root of 3. That's 4 square root of 3 plus 3. And that gives me 7 minus 4 square root of 3. That's your other answer. ये आपके पास 2x की वैल्यूज आ गई, आपको फाइंड करनी थी एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। All right, I hope that's clear to everyone. One, yes, you can do that. You could expand that here. आप यहाँ पे x minus 2 whole square को expand कर सकते थे और फिर उनको integrate कर सकते थे. That's also possible. You could do that. Okay. Adil, I have been thinking of doing that. Hopefully I'll be able to do that in a day or two. If मैं सारे जो जितने मैंने papers किए उन सब के साथ links डाल दूंगा PDFs के. I'm just not getting the time right now. I'll try to do that as soon as I can. Okay, inshallah. So that's your first part here. Let's look at the next part. It says f of x equals gh of x. Find the values of m and n. Okay, now let's look at the functions again. F of x आपके पास आ रहा है वहां पे, अच्छा, you have to be a bit careful here. यहाँ पे एक दफा दोबारा सोच लें, x greater than or equal to 0 आ रहा था, उसने आपको डोमेन दी हुई थी x should be greater than or equal to 0. एक वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, वो तो क्लियर है। दूसरी वैल्यू को आपने चेक करना है कि ये नेगेटिव तो नहीं आ रही, या आप कैलकुलेटर में डालें 7 minus 4 square root of 3 और इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करें, I'm getting 0.0718. That's very close. ये 0 से कम भी हो सकती थी, और अगर हो जाती आपको ये वाला आंसर इग्नोर करना पड़ता, ये वाला आंसर आपको इग्नोर करना पड़ता अगर ये नेगेटिव आ जाती तो। यहाँ पे तो we got away with that. अगर नेगेटिव आती आपको ये आंसर इग्नोर करना पड़ता, अगर आप इग्नोर नहीं करते you would lose 1 mark. Okay, so you have to check कि वो डोमेन के अंदर आ रही हैं आपके आंसर्स या नहीं आ रहे. So in this case this is fine because they're both positive. Okay. Given that f of x is identical to gh of x. Now that's interesting. You see, it's not an equation, or at least that's what I see here. It's not looking like an equation to me. I hope it's not a misprint on my paper. Yeah. So from what I see here, it's an identity. That means both sides are identical. Both sides are identical. Okay. Acha. F of x equals, or it's identical to gh of x. Identical का मतलब होता है ये जो आपके पास रिलेशनशिप है, it's true for all values of x. x की जो मर्जी वैल्यू इनपुट करें, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह के केसेस को, बिकॉज x की तो कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे ये दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। तो इसमें उसने कहा है आपने आइडेंटिटी को यूज करके m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है. लेट्स डू दैट. मुझे फंक्शंस बार बार लिखने पड़ेंगे. आई एम एक्चुअली गोइंग टू राइट देम ऑन द साइड हियर. f of x is
x minus 4x raised to power 1 over 2 plus 1. The domain for that is x greater than or equal to 0. G of x is mx squared plus n, and x is greater than or equal to minus 2 for that. M and n are constants. H of x is x raised to power 1 over 2 minus 2. And here x is greater than or equal to 0. ये आपके पास तीन फंक्शन है. अच्छा, f of x हमें पता है. लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया? x minus 4x raised to power 1 over 2 plus 1. It's identical to g of h of x. तो g के अंदर क्या इनपुट करना है? g के अंदर आपने इनपुट करना है h, which is x raised to power 1 over 2 minus 2. Okay, what do we get then on the right side? Left side पे कुछ नहीं आपको करना, उसको as it is रहने दें. g के अंदर ये इनपुट कर दें. So g के अंदर जहां पे भी x आ रहा है, x की जगह पे हम ये डाल देंगे m into x raised to power 1 over 2 minus 2 whole square plus n. Now, it's an identity. तो हमें करना क्या है? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को. ठीक है, सिंप्लीफाई करके we say since the left side and the right side, whatever we get at the end, they are identical, the coefficients of the like terms, they should be equal to each other. ठीक है, that's what we're going to do. तो हम क्या करेंगे? राइट साइड को लेफ्ट साइड वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट साइड को एक्सपैंड कर लेते हैं. ठीक है, राइट साइड को एक्सपैंड कर लें. What do we get when we do that? A minus b whole square, that's going to be x raised to power 1 over 2 ka whole square, which is x, minus 2 into both of them, that's going to be minus 4x raised to power 1 over 2 plus 4 plus n. Let's simplify this. I'm getting mx minus 4m x raised to power 1 over 2 plus 4m plus n. Now, what do I have? On the right side, I've got this. On the left side, I've got x squared minus 4x raised to power 1 over 2 plus 1. Now what I can do is, I can compare both sides. Okay, I can compare both sides. जो लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट है, वो राइट साइड पे x के कोएफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए. x का कोएफिशिएंट, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, x स्क्वायर नहीं था, इट वाज ओनली x. या लेफ्ट साइड पे जो x का कोएफिशिएंट है वो राइट साइड पे x के कोएफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए. लेफ्ट साइड पे इट्स बेसिकली 1, राइट. राइट लेफ्ट साइड पे जो x raised to power 1 over 2 का कोएफिशिएंट है, that should be equal to the coefficient of x raised to power 1 over 2 on the right side. So this should be equal to this. And then constant should also be the same. 4m plus n should equal 1. ये आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई. फर्स्ट से आपके पास क्या आ गया? m equals 1. जब आप x को कंपेयर करेंगे, x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें, येलो वाला पार्ट को, you get m equals 1 from that. सेकंड से भी आपके पास m equals 1 ही आ रहा होगा, उसका फायदा नहीं है. लास्ट को देख लें, कांस्टेंट को, 4m plus n, that should equal 1. m की वैल्यू 1 है. 4 into 1 plus n equals 1, n equals minus 3. These are the values of m and n that we were looking for. ठीक है? Okay, so this is what we get. Daniel, to answer your question, you could do that here in this case. आप ये कर सकते थे, आप 4x raised to power 1 over 2 एक साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे x plus 1 आ जाए, and then you square both sides. That works in this question. But remember, हमने क्या कहा था? We've discussed this in class multiple times. Whenever we square something ourselves, when we square an equation, there is a possibility of getting extra answers. There's a possibility of getting extra answers. यहाँ पे नहीं आएंगे, but in a lot of times, you end up getting extra answers if you square both sides yourself. तो जब आप वो करोगे, अगर आप इस तरह का कुछ करते हो, आपको अपने आंसर्स वेरीफाई करने पड़ते हैं एंड के ऊपर. यहाँ पे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज वी गॉट x raised to power 1 over 2 हियर. तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो मसला नहीं होगा. अगर कोई और इक्वेशन होती है उसमें आप खुद से स्क्वायर करते, वो मसला आ जाता है कभी कभी कि आपके पास एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाते हैं. जस्ट हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अपने आंसर्स एंड पे वेरीफाई कर लें कि सारे ट्रू हैं या कोई एक्स्ट्रा रूट आ रहे हैं आपके पास. ठीक है? Okay, I hope that answers the question. That was part B of this functions. Let's move on to the next one. Sure. We've got this, this is circular mirror. Again, we've got a circle. So that's the third time we are seeing circles in a question, but
this is different. The diagram shows a circle with center A of radius 5 and a circle with center B of radius 8 centimeters. The circles touch at the point C, so that ACB is a straight line. The tangent of the point D on the smaller circle intersects the larger circle at E. So this is the point E, and DB is a tangent to the smaller circle. Okay, वो E उस bigger circle को वहाँ पे intersect कर रहा है. And it passes through B. Yeah, you can see that. So B is the center of the other circle. A or B आपके centers हैं circles. Now what do you have to find out? We have to find the perimeter of the shaded region. Okay. So perimeter क्या होता है? It's the length of the boundary. ये तीनों lengths आपने find करनी है. That's a 5-mark question, so it's going to require some working. Boundary की length कैसे find कर सकते हैं? दो arc lengths आ रही हैं. You got this arc, you got this arc, and you've got this straight line. ये तीन चीजें find करनी है. ठीक है? अच्छा, arc lengths के लिए आपको क्या चाहिए होता है? Angle चाहिए होता है. How can you find the angles? It's a right angled triangle. Okay. And we know that this side is 13. This side 13 hai, AB. We know that. And we also know this side, this should be 5. This is the radius of the smaller circle. So we know two sides in the right angle triangle, you can find the angles. Let me call this angle something. Let's call this, I don't know, alpha. Let's call this beta. Let's find these angles. So alpha angle kaise aayega? This is the base according to the angle alpha, and 13 is the hypotenuse. So base or hypotenuse में क्या relationship होता है? We've got cos, so we say cos alpha equals 5 over 13, and that's going to give me the angle. ये radians में रखना है, remember? क्योंकि आपको जो formulas use करने हैं, S equals R theta, उसमें आपको radians में answers, radians में input करनी होती हैं values. Haris, let me answer your question, and after this question, cos inverse of 5 divided by 13. Remember, आपने degrees radians में रखना है इसको. Let me change that. Cos inverse of 5 divided by 13. That's giving me 1.176. Okay, that's the angle alpha. अगर angle alpha ये है, तो beta क्या हो जाएगा? You don't have to use trigonometry for that again necessarily. आप बाकी में से minus कर दें, pi में से minus कर दें pi over 2, the right angle, and also subtract 1.176, and that's going to give you the angle beta. Pi minus pi divided by 2, 1.176. That's going to give me 0.3948. This is beta. So I've got the two angles. दोनों angles आ गए. अब दोनों arc lengths से मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, दोनों arc lengths निकाल सकता हूँ. This is March 2022. Arc lengths निकाल सकते हैं दोनों. वो तो हो गया. अच्छा, अब और क्या करना है हमें? और हमें करना है DE की length चाहिए किसी तरह से. DE की length चाहिए. How do you find DE? That's pretty straightforward actually. You know BE. BE तो आपको पता है. BE is 8. B से लेकर E तक. It's the radius of the biggest circle, right? What we can do is we can use the right angle triangle and find this complete length. Okay? So let me write that here. AD equals 5, right? AB equals 13. दोनों का sum. हम DB find कर सकते हैं. Total length BD. BD find कर लें. What's that? That is going to be BD square equals hypotenuse square, which is AB square minus AD square. This is Pythagoras, right? BD square is equal to 13 का square minus 5 का square. यहाँ से BD मेरे पास आ जाएगा. I think it's going to be 12, right? 144 हो जाएगा और उसका square root, that's 12. BD की value 12 आ गई. If BD is 12, we know the length of DE then. DE क्या हो जाएगा? DE is going to be 12 minus the radius of the bigger circle, that's 4. Minus 12 minus 8, that's going to give me 4. ये length आ गई DE की. ठीक है? Now I can find the perimeter. Just add all of those sides. Perimeter is the arc
CE, CD and CE, both of them, plus the length DE. Arc length कैसे find करते हैं? S equals R theta, remember? Radius क्या है? For the smaller circle, CD के अंदर smaller circle use करेंगे. So that's 5 radius into the angle alpha, that was 1.176. Plus arc length CE, radius उसमें क्या है? बड़ी वाली arc के अंदर, बड़े वाले circle के अंदर 8. Arc length or angle, sorry, that's this 0.3948 plus DE, that's 4. Just evaluate this to get the perimeter. उसने exact नहीं मांगा ना यहाँ पे. Yeah, so we can just write in decimals. It's going to be 5.1.5 into 1.176 plus 8 into 0.3948 plus 4, and that's giving me 13.04. ठीक है, आप इसको exact लिख देंगे पहले, मतलब ज़्यादा accurate लिख देंगे, but if you want to round it off, you can round it off. That's going to be 13.0. That's the perimeter. Okay. So that was this part. Let's move on to the next one. Part B, find the area of the shaded region. Okay. Area of the shaded region. How can you find that area? How do you describe that area? पहले इसको सोच लें. Triangle में से क्या minus किया हुआ है? ये दो sectors minus किया हुआ है, right? Triangle में से दो sectors minus कर दिए. What's the area of the triangle? Let's write that down here. Shaded area is basically the area of the triangle minus the area of the sector ADC or ACD minus the area of the sector BCE. दोनों sectors आपने minus कर देना उसमें से. ठीक है, and that's going to give you the area. That's pretty straightforward. Triangle के area half into base into height. It's a right angle triangle. Base into height use कर लें. Base क्या ले लें? 5 base. और ये DB कितना था? 12. 12 is your height. ठीक है, या किसी को भी base लेंगे height लेना, doesn't really matter. 5 और 12 लेना आपने. So that's 5 into 12 minus area of the sector. Area of sector का formula क्या होता है? Remember, ये formula sheet में दिया होता है half r square theta. Half radius of the smaller sector, ACD is the smaller sector, right? उसका radius कितना था? 5. What about the angle? Angle was 1.176. Minus half radius of the bigger circle, that was 8 square, and the angle was 0.3948. 3948. Just evaluate this, and that's going to give you the result. ये देख लें क्या आता है आपके पास. 6 into 5 minus 25 divided by 2 into 1.176 minus 32 into 0.3948. And that's giving me 2.666. If you want to round it off, it's going to be 2.67. That's the area of the shaded region. Yeah, okay, that's the second part. It was a very easy question. Okay, then we have to move on to the next one. Let me just answer that. Part A में आपको क्या चाहिए था? A plus B square root of C. अच्छा. Okay. सबसे पहले तो look at the question statement. It says giving your solutions. एक आपको hint वहां से मिल रही है. It has to be multiple answers. एक answer इसका हो नहीं सकता. It has to be multiple answers. Question statement बहुत exact होती है. अगर उसने solutions लिखा हुआ है, it has to be more than one solution. That's one thing. अच्छा. Now this is A plus B square root of C. उसने ये तो नहीं कहा कि A, B दोनों positive numbers हैं. Negative भी तो हो सकता है ना. तो basically अगर आप B के negative value ले लो, you get this. तो B negative तो हो सकता है. उसने ये तो नहीं कहा कि B positive होना चाहिए. So B की value को negative आ जाए, अब इससे second root आ जाएगा. All right, Haris, is that okay? So that was the explanation for that. Let's move on to the next question now. Question number 11. It's given that a curve has equation y equals 3 into 3x minus k whole raised to power minus 1 plus 3x, where k is a constant. Find in terms of k the values of x at which there is a stationary point. So we have to differentiate this. I think अभी तक differentiation और कोई question नहीं आया था पीछे.
So we have the curve y equals k into 3x minus k whole raised to power minus 1, 3x. That's the function. Stationary point पे x coordinate find करने. How do you find stationary points? You differentiate. You say dy over dx. That is going to be k as it is. Multiply by the power. Subtract 1 from the power. Multiply by the derivative of what is inside the brackets. That's 3. Remember, k constant है, तो k का derivative 0 ही होगा. Plus 3x, 3x का derivative 3. What you do now is you put the derivative equal to 0. What do you have on the right side? Minus k over 3x minus k whole square. You also have this 3. So यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 3k. Plus 3. That's what we're getting. And now we take this to the other side. That's going to give us 3k over 3x minus k whole square equals 3. Let's cross multiply. What happened there? Yeah, let's cross multiply. We get 3k equals 3 into this thing. Let's go evaluate. 3x ka whole square is 9x square minus 2 into 3x into k. That's 6kx plus k square. Let's simplify. We get 3k equals 27x square minus 18kx plus 3k square. And that gives me 3k square minus 18kx. Sorry, let's start the other way around. X is the variable, so that's 27x square. And then the x term, that is minus 18kx. And then the constants are 3k square and minus 3k. We can simplify this. 3 से divide कर दें. That gives us 9x square. Actually, मैं यहाँ पे cancel कर सकता हूँ इसको यहाँ पे. But anyway, since I did not do that, let's simplify here. 9x square minus 6kx plus k square minus k equals 0. ये मेरे पास एक quadratic equation आ गई. Now I need to solve this quadratic equation. उसने क्या कहा था? Find in terms of k the values of x at which there is a stationary point. अब इस equation को हमें solve करना है. अब ये तो k के terms में आएगा. इसको factorize तो most likely करना थोड़ा सा complicated हो जाएगा. You could try if you want, but most likely it's not going to work. हम क्या करते हैं? Quadratic formula input कर लेते हैं. Quadratic formula में values input कर देते हैं. We got x equals minus b. Let me write down the values of a, b, and c here, just for clarity. A is going to be 9 here. B is going to be minus 6k. And c, that's the constant, that is k square minus k. Okay? ये जाके formula में input कर दें, quadratic formula के अंदर. Let's see what that gives you. That gives you x equals minus into minus 6k plus minus square root of minus 6k ka whole square minus 4 into 9 into k square minus k divided by 2 times 9. Okay? What do we get from this? We get 6k plus minus square root of 36k square minus 36k square plus 36k. Right? Is that correct? I think that's correct. 36k square and 4 into 9, that's 36. 36k square plus 36k. Yeah, that's okay. That's 36k square or 36k square cancel. Okay. What are we left with? 6k plus minus square root of 36 times k divided by 18. Now, what's the square root of that? That's going to be 6k plus minus 6 square root of k divided by 18. 6 common ले लिया और आपके पास वो cancel हो गया denominator के साथ. Let me just do that here. 6 into k plus minus square root of k divided by 18. Cancellation हो जाएगी. What are we left with? उसने किस फॉर्म में मांगा आपसे? कोई इसने फॉर्म मांगी है नहीं. सिर्फ का in terms of k. So we are going to get 1/3 into k plus minus square root of k. These are the values of x that you're getting. इसको अलग-अलग लिखते हैं if you want, or you can just leave it like this. That's your final result. ठीक है?
ये आपके पास x in terms of k आ गया. All right, that was this first part here. Let's move on to the next one. Now it says the function f has a stationary value at x equals a, and it's defined like this. F of x equals 4 into this thing for x greater than or equal to 3 over 2. Find the value of a and determine the nature of the stationary point. Now, what was in the previous part? ऊपर तो कोई function नहीं था. Now this is the function. What's the relationship between the two? Yeah, so if you compare the two, ऊपर वाली जो function था उसमें k की जगह पे बस 4 आ गया. k की जगह पे 4 आ गया. Let me write that down here. Let me write that down. ऊपर जो हमारे पास function था, it was k into 3x minus k whole raised to the power minus 1 over 2 plus 3x. This is what we were given there. तो आप देखिए इसको compare करें दोनों को. k की जगह पे बस यहाँ पे 4 आ गया. So basically हमें सारी working दोबारा करने की जरूरत नहीं है. उसने कहा find the value of a. उसने कहा x equals a के ऊपर आपका stationary point है. Okay. So आप क्या करोगे? आप क्या करते? You would find the derivative. डेरिवेटिव आपने पहले फाइंड किया हुआ है उस फंक्शन का k के टर्म्स में. आपने डेरिवेटिव फाइंड किया था ऊपर. डेरिवेटिव को आपने 0 से इक्वेट किया था, है ना? 0 से इक्वेट किया था, आपके पास x की वैल्यूज आ गई थी, ये दो वैल्यूज आ गई थी. ओके, सो बेसिकली आपके पास इस केस के अंदर x की वैल्यूज इवेंचुअली क्या आएंगी? 1/3 into k plus minus square root of k. k की जगह पे क्योंकि 4 आ गया है, you can write down those values directly here. 4 plus minus square root of 4. क्योंकि इन दोनों को कंपेयर किया, k की जगह पे सिर्फ 4 इनपुट हो गया. आपको वो सारी वर्किंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है. आप कर सकते थे, you would still get the same thing at the end because वो सारा काम पे यहाँ पे जो किया आपको दोबारा करना पड़ता है. यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है. That's why it's only 3 marks because you just have to use the previous part. Okay, x की ये वैल्यूज आपने फाइंड की हुई. अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है x equals a के ऊपर स्टेशनरी वैल्यू, तो इसमें जो x की वैल्यू आपको यहाँ पे जो आ रही है, that's basically a. So we say a equals either this 1/3 into 4 plus square root of 4, or a equals 1/3 4 minus square root of 4. What do we get from both of them? 4 plus 2, that's 6. 6/3, यहाँ पे से 2 आ जाएगा. Second value से क्या आएगा? 4 minus 2, that is 2. That's going to be 2/3. Actually, now we are given a domain here. X should be greater than or equal to 3/2. 1.5 से बड़ा होना चाहिए. This is a smaller value. So we say this is not possible. ये possible नहीं है. ये नहीं हो सकता. So the value of A should be equal to 2. A की value plus 2 आ गई. That's one thing that we had to do here. And then it says determine the nature of the stationary value. Nature कैसे find करेंगे? You find the second derivative and put that and find कि वो second derivative positive आता है या negative आता है. Let's find the second derivative now. First derivative already था हमारे पास. Let's use that. First derivative क्या आ रहा था? First derivative was yeah, right here. Let me use that. F dash of x. I'm taking this from the previous part. Minus 3k over 3x minus k whole square. Or let me write it in power form. That is good. Differentiate करना आसान हो. 3x minus k whole raised to power minus 2 plus 3. This was the first derivative. ठीक है. k की वैल्यू अगर हम 4 इनपुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? -12 into 3x minus 4 whole raised to power minus 2 plus 3. ये आपके पास first derivative है. ठीक है. Let's differentiate it once more. दोबारा से differentiate कर लें. What do we get? -12 into -2 into 3x minus 4 whole raised to power minus 3 and multiplied by 3 again. 3 का derivative तो 0 आएगा. What do we get from this? Second derivative क्या आ गया? We're getting 24 over, no, 24 and 3 भी है बाहर. 24 into 3 is going to be 72 over 3x minus 4 whole cube.
अब क्या करेंगे, इसके अंदर इनपुट कर दें, क्या वैल्यू 2 इनपुट कर दें x की वैल्यू, और देखें आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है. So we put x equals 2. That was the stationary point. What do we get? F double dash of x, that is 72 over 6 minus 4 whole cube. We're gonna get a positive value. 72 over 8 क्या हो जाएगा? It's going to be 9. Since this is positive, we say it is going to be a minimum point. Nature क्या हो जाएगी? Minimum point हो गया. ठीक है, that's one way to do this using the second derivative. ये आप कर सकते हैं. तो आप दूसरा आइडिया भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा हो रहा है यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना. the other idea is आप इस फंक्शन के अंदर क्या करें, एक दफा 2 इनपुट कर दें फंक्शन के अंदर, दैट्स द स्टेशनरी पॉइंट. 2 इनपुट कर दें, एक 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाल दें, लेट्स से 1.9, एक 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाल दें 2.1. तो होगा क्या, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है, तो 2 पे जो वैल्यू होगी, 2 पे क्या वैल्यू आती है इसकी, लेट मी फिगर दैट आउट. 2 पे वैल्यू क्या होगी, 4 into 4 divided by 2 हो जाएगा. 2 plus 3 into 2, that's going to be 8. 2 के ऊपर y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आती है 8. ठीक है, अब क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट होगा, ये वाली वैल्यू 2.1 के ऊपर आपके पास 8 से बड़ी आएगी, 1.9 के ऊपर भी 8 से बड़ी आएगी. अगर दोनों वैल्यू बड़ी आ जाती हैं, आप कहेंगे ये मिनिमम पॉइंट है. दैट्स अनदर वे टू थिंक अबाउट दिस. अगेन इसकी वर्किंग शो करनी होगी. अब तीनों पॉइंट्स पे फाइंड कर लें. अगर टर्निंग पॉइंट के साइड वाले पॉइंट्स दोनों उससे छोटे हैं, तो वो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा. अगर टर्निंग पॉइंट के साथ वाले पॉइंट्स, राइट और लेफ्ट वाले पॉइंट्स दोनों से अगर साइड वाले पॉइंट्स दोनों छोटे हैं, तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा. अगर साइड वाले पॉइंट्स दोनों बड़े हैं, तो ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा. ठीक है, सो दैट्स अनदर वे टू थिंक अबाउट दिस. यू कुड डू दैट एज वेल, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना चाहते, अगर वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दैट्स द लास्ट पार्ट. The function g is defined by g of x equals minus 3x plus 1 whole raised to the power minus 1 plus 3x, and it's defined like this. Now it's a different function. Is that related to what we've done before? Again, it's related to what we've done before. Let me explain how that is. G of x is minus into 3x plus 1 whole raised to the power minus 1 plus 3x. Again, थोड़ा सोचना है यहाँ पे. Original function क्या दिया हुआ था? It was y equals k into 3x minus k whole raised to the power minus 1 plus 3x. ये minus 1 over 2 क्यों आ गया यहाँ पे? Minus 1. I wrote that by mistake here. This was supposed to be minus 1. Yeah, but that doesn't hurt us, fortunately, because हमने कहीं पर उसको use नहीं किया था आगे. Plus 3x. This is what we had given in the first part. अब देखें इसको कंपेयर करें इसके साथ. It looks very similar. k की जगह पे क्या आ गया अब आपके पास? You see, you've got minus 1. अंदर वाला भी देखें, minus k था, तो minus k की जगह minus 1 इनपुट करेंगे, आपको plus 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया है? In place of k, we now have minus 1. ये अब k की वैल्यू यहाँ पर आ गई. ठीक है, अच्छा उसने क्या कहा है? Determine, making a reasoning clear, whether g is an increasing function or decreasing function or neither. Increasing decreasing function कैसे find करते हैं? You find the first derivative and figure out कि वो आपका positive आ रहा है, negative आ रहा है. How do you find the first derivative? Again, आपको इसकी form पता है ये क्या आ रही थी ऊपर? First derivative की form, remember हमने ऊपर क्या लिखा होगा? ये आपकी first derivative की form थी k की terms में. इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. y dy over dx हमारे पास ऊपर क्या आ रहा था k की टर्म्स में? It was minus k, or in fact minus 3k over 3x minus k whole square plus 3. This was what the derivative was there. Minus 3k over 3x minus k whole square plus 3. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू minus 1 होगी है, g dash of x, g का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? It's going to be minus 3 into 1, because k की value minus 1 है, minus 3 into minus 1 over 3x plus 1 whole square
plus 3. Right? Or you could just actually differentiate it again with यहाँ पे बहुत आसान था, आप दोबारा से खुद से differentiate कर लें, it doesn't matter. You don't necessarily have to use the previous part, आप खुद से वैसे भी कर सकते थे. That's also possible. That would also work. अच्छा, आपने differentiate कर लिया, आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 3 over 3x plus 1 whole square plus 3. Now, whatever value of x you input here, you've got a square here. You say this is positive. This is a square, so that is positive. Plus 3, this is positive. So what do you say then? You say derivative of x, g dash of x is greater than 0. इसका क्या मतलब हुआ? Derivative जब positive होता है, it's an increasing function. ठीक है? It's an increasing function. अच्छा, यहाँ पे आप वैसे दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं खुद ही से, k को यूज करने के बजाय that would have actually been quicker, क्योंकि इतना मुश्किल डेरिवेटिव नहीं है, खुद से दोबारा से कर लें rather than comparing with that. But that's what we get. ठीक है? So directly we differentiate करेंगे. This is what you're going to end up getting. And now since we have a square there and a plus term, it's going to be an increasing function. Okay. Any problems with this? Because that's our last question, and we stop here. ये हमारे पास ये paper complete हो गया. This is March 2022. This was March 2022, paper 1, variant 2. Overall, a fairly easy paper. Last question, थोड़ा सा इसका part B थोड़ा tricky था, but apart from that, it was okay. Transformation वाले question का second part थोड़ा सा tricky था, but overall, it wasn't a very difficult paper. So I assume इसका threshold जब आएगा, it is most likely going to be slightly higher. That's what I think, because it's an easy paper. Anyway, that's it for today. I'll see you again the day after tomorrow. We're not having a class tomorrow. We will have our next class the day after tomorrow, inshallah.